नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मॉक टेस्ट 8 यूजीसी नेट जेआरएफ या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए इन्वायरमेंट साइंस के में पेपर 2 के लिए। और अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे हर वीक एक प्रैक्टिस सेट आता है और प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज मॉक टेस्ट 8 for UGC NET-JRF or state level eligibility test for environmental sciences. You want to have more practice sets? Please like and subscribe to my channel, and you will get the link in the description box of multiple practice sets. Okay, so let's start. Question 1. In which stage of decomposition of landfill waste the bacteria acetogen helps to reduce the pH of leachate and allows heavy metals to solubilize? कि कौन सा स्टेज होता है लैंडफिल वेस्ट के डिकम्पोजिशन में जब बैक्टीरिया एसिटोजन जो वेस्ट का जो पीएच का लीचेट है उसको रिड्यूस करता है, मतलब पीएच को एसिडिक कर देता है और उससे हेवी मेटल्स सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। तो वो कब होगा? एरोबिक फेज में? नहीं। अनस्टेडी मेथनोजेनेसिस फेज में? नहीं। स्टेडी मेथनोजेनेसिस फेज में? नहीं। एसिड फेज में, जब एसिड बनता है और पीएच कम होता है और मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यही होता है। आंसर होगा 1 का बी, एसिड फेज। सो when in the acid phase, the bacteria acetogen helps to reduce the pH of the leachate, that is pH becomes acidic and metals react and solubilize with the acid. That will be, answer will be 1 ka B, acid phase. Question 2. On-site mulching and composting of waste is a component of integrated solid waste management under the process of, options are A, recycling, no. B, disposal, no. C, source reduction, or D, disinfection. So clearly on-site mulching, which is breaking the waste, agricultural waste, into pieces and covering the soil with that. So that mulching or composting of waste, when it is done on-site, that means it's source reduction. The waste is being reduced at its source itself, on-site. So this word is very important. Answer will be C, source reduction. Okay, तो on-site mulching हो रहा है, तो जब ऑन साइट होगा तो इसका मतलब सोर्स में ही वेस्ट को रिड्यूस कर लेगा, तो आंसर होगा सी, सोर्स रिडक्शन। ठीक है। क्वेश्चन 3. Which of the following materials are used as landfill sealants? लैंडफिल साइट्स में सीलेंट की तरह कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? ए, फ्लाई ऐश, नहीं। बी, लाइम, नहीं। सी, बेंटोनाइट, डी, ब्यूटाइल रबर, या ई, सी एंड डी। तो लैंडफिल सीलेंट के तौर पे बेंटोनाइट और ब्यूटाइल रबर दोनों को ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन होगा ई, सी एंड डी। प्लीज रिमेंबर दैट एज अ लैंडफिल सीलेंट बोथ बेंटोनाइट and butyl rubber are used, and that's why the option will be C and D. So this sealant actually prevents odor or water from percolating below the landfill site and prevents the leachate from seeping to the into the groundwater. Okay, so answer will be E, C and D. The lime stabilization and drying of biosolids ensure, option A, creating unfavorable conditions to vector, option B, high pH content of biosolids, option 3, reduction of all toxic elements. So clearly when you add lime, the pH becomes more basic and the pH contents of biosolids increases. So this is the correct option for sure. Then reduction of all toxic elements. So when you add lime, the lime reacts with the toxic elements, which is the organic elements as well as the heavy metals in the biosolids. Then third, creating unfavorable conditions to the vector. This option is also true. Why? Because when you add lime, the pH becomes high. So then it becomes difficult for the vectors to feed on it. If the pH becomes 8 or so, then the vectors cannot feed on it. So, and the bacteria cannot thrive. So there could be, the option could be D, 1, 2, and 3, creating unfavorable conditions to vector, high pH content of biosolids, and reduction of all toxic elements. However, UGC NET has given the option B, which is 2 and 3, high pH content of biosolids and reduction of all toxic elements. So I suggest the option B, 2, high pH content of biosolids and reduction of toxic elements, B. तो जब लाइम ऐड करते हैं तो pH भी बढ़ता है और टॉक्सिक एलिमेंट से रिएक्ट भी करता है लाइम, तो रिडक्शन हो जाता है और फिर वेक्टर्स के लिए भी अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है। पर यूजीसी नेट ने आंसर दिया है बी, 2 and 3।
तो आप यही मान के चलिए, हालांकि मेरे हिसाब से आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3, ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट का आंसर कभी कभी गलत भी होता है और इसलिए स्टूडेंट्स उसको चैलेंज भी करते हैं। क्वेश्चन 5, which of the following wastes undergoes exothermic self-accelerating decomposition? Now exothermic means any reaction which emits heat, that is exothermic. So कौन सा वेस्ट है जो एक्सोथर्मिक हीट इमिट करता है और खुद ही उस हीट की वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ता ही जाता है? आंसर होगा ए, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. In the biogas digester having biomass and animal waste as feed, the initial pH for optimum methane production should be. तो इनिशियल पीएच ऑप्टिमम मेथेन प्रोडक्शन के लिए वही होगा जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि बैक्टीरिया ही वेस्ट को डिकम्पोज करता है और फिर मेथेन प्रोड्यूस होता है. तो आंसर होगा ए, 6.6 to 7, बिकॉज दिस इज द ऑप्टिमम पीएच फॉर बैक्टीरियल पीएच रेंज फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ. ठीक है. क्वेश्चन 7, द प्रोसेस ऑफ वर्मिंग कंपोस्टिंग डिपेंड्स अपॉन ए, types of organic waste, yes. Type of earthworm, yes. Moisture content of organic waste, yes. So the correct option will be D, all of these. Oh, I'm sorry, I forgot to tell you. If you want to solve the question yourself, just mute the audio and solve it yourself. अगर आप चाहते हैं कि आप ये प्रैक्टिस सेट खुद सॉल्व करें, ऑडियो को म्यूट कर दीजिए और खुद सॉल्व कीजिए, इसलिए मैंने कोई किसी आंसर को मार्क नहीं किया है. ठीक है. Which of the following methods reduces the volume of waste but risks the release of toxicants in the air? A, biological treatment, no. Sanitary landfill, no. Incineration या chemical treatment. The correct answer will be incineration. Answer is C. Because जब incineration होता है तो बहुत सारा वेस्ट को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वो एकदम से जला के राख कर देता है, लेकिन उससे अक्सर डाइऑक्सिन्स और फ्यूरॉन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते हैं. तो आंसर होगा डी. Question 9. The most dangerous toxicant released from incinerators are. कौन सा सबसे डेंजरस टॉक्सिकेंट है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्सिन्स या फ्यूरॉन्स? सो हम सब जानते हैं कि डाइऑक्सिन्स और फ्यूरॉन्स मोस्ट टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो इंसिनरेटर से निकलते हैं. तो आंसर होगा ई, डाइऑक्सिन्स एज वेल एज फ्यूरॉन्स. सो वी ऑल नो दैट द मोस्ट dangerous toxicants released from incinerators are dioxins and furans. So the correct answer will be E, dioxins as well as furans. Question 10. Some of the properties associated with modern landfill sanitary sites. Modern sanitary landfill sites are. आधुनिक जो landfill sites होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? They reduce the volume of municipal waste, solid waste in short time. They release CH4 and CO2. They produce leachate which pollutes groundwater. या डी, ऑल ऑफ दीज. तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ये, दे रिलीज मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है, यही सही आंसर है, क्योंकि बाकी लैंडफिल में जो मॉडर्न लैंडफिल है वो अब सीलेंट से सील कर दिया जाता है, तो उससे लीचेट ग्राउंड वाटर को पोल्यूट यूजुअली नहीं कर पाता है. एंड दे रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट फॉर श्योर, बट इट्स नॉट इन लाइक अ वेरी शॉर्ट टाइम. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी बी. हालांकि आप ये चारों ही आंसर में से कोई, ये तीनों ही आंसर में से कोई भी गलत नहीं है, लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुने, आंसर विल बी बी, एंड दैट इज द आंसर फ्रॉम द यूजीसी नेट. तो अगर यूजीसी नेट का आंसर मैं मानूं तो आंसर होना चाहिए बी. क्वेश्चन 11. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्यूल इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू. करेक्ट सीक्वेंस. तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की होती है. वी ऑल नो इट. हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, एंड दैट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एंड डी. Now we have to pick up which of the following is correct. So after hydrogen, the highest calorific value is of methane, CH4. ठीक है? And after that, it is ethanol and then comes methanol. जबकि ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन प्लस इथेनॉल फ्रॉम मिथेन फ्रॉम मेथनॉल. तो ये नहीं होगा, बी होगा. हाइड्रोजन हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू फॉलोड बाय मेथेन, उसके बाद इथेनॉल एंड देन मेथनॉल. सो बी इज द करेक्ट आंसर. और इसको रट लीजिएगा, प्लीज रिमेंबर इट, मेमोराइज इट, because you must know the sequence, because this question can be repeated in a UGC NET exam. Question 12. An environmental problem associated with landfill site is. Landfill site के साथ कौन सी environmental problem associated हो सकती है? A, groundwater pollution, methane production, incomplete decomposition, or D, all of these. So we all know that methane production is associated with landfill site. Incomplete decomposition, that is also true, because landfill site में decomposition is very slow and incomplete. And then groundwater pollution. This is not common these days, but this problem also occurs in relatively old landfill sites.
तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या क्या है? तो मेथेन प्रोडक्शन तो होता ही है, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको, लेकिन मेथेन को अक्सर कलेक्ट करके उसको एज फ्यूल यूज कर लिया जाता है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। जहाँ कलेक्ट नहीं किया जाएगा वहां पे वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन, ये भी सही है, क्योंकि वेस्ट टोटल डिकम्पोजिशन नहीं होता है लैंडफिल साइट में, कभी भी नहीं होता है टोटल डिकम्पोजिशन। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ये भी कभी कभी होता है। जो पुराने लैंडफिल साइट्स हैं जिनमें ठीक से सीलेंट यूज नहीं किया गया, तो उनको ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की भी दिक्कत आती है। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। और मैं 1 मिनट के लिए बता दूं लैंडफिल साइट में होता क्या है। आपके घरों से वेस्ट कलेक्ट करते हैं, उसको ट्रांसफर स्टेशन में ले जाते हैं, वहां पे वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, और जो वेस्ट लैंडफिल साइट में जाने लायक है उसको ले जाया जाता है, और उसको वहां पे उसको ट्रैक्टर से उसको उस पर लैंडफिल साइट में उसको वेस्ट को डंप करके और ट्रैक्टर से उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाया जाता है, तो वो एकदम कॉम्पैक्ट हो जाता है। और फिर उसके ऊपर सीलेंट की एक लेयर डाल दी जाती है। जनरली उसके ऊपर एक सॉइल की या फ्लाई एश की लेयर डाल दी जाती है, और उसके ऊपर रोज 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 वेस्ट डिकम्पोज होता जाता है, वेस्ट डाला जाता है। पर सबसे पहले जब लैंडफिल साइट डिजाइन होता है, तो लैंडफिल साइट में सबसे नीचे एक पॉलिथीन शीट की तरह एक बेंटोनाइट या ब्यूटाइल रबड़ की लेयर डाली जाती है, ताकि ऊपर जितना भी कचरा है उससे जब रेन वाटर उस पर पड़ेगा तो वो पानी सीप होकर जमीन में ना जा सके। तो सीलेंट वही होता है जो नीचे डाला जाता है, और जब लैंडफिल साइट भर जाता है तब भी उसके ऊपर में सीलेंट डाला जाता है। सो आई रिपीट एवरीथिंग इन जस्ट 1 minute. What happens in case of landfill? So waste from your home is collected and transported to a transfer station. Here the waste is segregated. The waste that is intended for landfilling is taken to the landfill site, and that waste is compacted with a tractor, and on that a layer of dirt or fly ash is added, and that is the process for one day. And next day again the waste from transfer station comes, again it is compacted on the landfill site, again a layer of fly ash or soil is added. But the bottommost layer, when a landfill site is designed, that time a sealant is used as the bottommost layer, and that sealant is usually of butyl rubber or bentonite, and that sealant prevents any leachage from the landfill site to the mixing it into the groundwater, because eventually rainfall will occur and rain will fall on the landfill solid, and that water might trickle down to the groundwater. So to prevent that trickling down of percolation of leachate to the groundwater, that sealant is used when the landfill is designed, and that is the bottommost layer of the sealant. And then every day the landfill site is dumped at, like the solid waste is dumped at and compacted, and a layer of soil or dirt or fly ash is added on top of that. And finally, eventually, when the landfill site is totally done, like years, like for 10 or 15 or 20 years later, when the landfill site is completely filled, then they might again seal it with a sealant on top. Okay. So that was something about landfilling. Which of the following is not part of waste reduction strategy? A, reduced use of raw material. Of course, it's a waste reduction strategy. Material reuse. This is also a waste reduction strategy. Recycling of waste. Of course, reduce, reuse, and recycling. These are all waste reduction strategies. Decreased toxicity. This doesn't reduce the waste. So answer will be D. Okay. तो इसमें से कौन सा है जो वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी होता है? जो नहीं है वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी, तो रिड्यूस्ड यूज ऑफ रॉ मटेरियल, रिड्यूस्ड, तो ये तो रिडक्शन स्ट्रेटजी है। मटेरियल रीयूज, तो ये भी रिडक्शन स्ट्रेटजी है। रिसाइकल, ये भी रिडक्शन स्ट्रेटजी है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये तीनों ही वेस्ट रिडक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। सिर्फ ये डिक्रीज टॉक्सिसिटी, इससे कोई वेस्ट डिक्रीज नहीं होता है, रिड्यूस नहीं होता है। तो ये टॉक्सिसिटी कम हो जाती है वेस्ट की, लेकिन वेस्ट रिड्यूस नहीं होता। दिस इज द आंसर, डी। ISWM stands for A, Integrated Solid Waste Management. Please memorize it. Which of the following compounds is formed due to aerobic decomposition of DDT? So DDD, DDE, DDN या DDS. इसका सही ऑप्शन होगा DDE. और let me explain this answer. Sorry. Let me explain this answer. DDT, dichloro diphenyl trichloroethane, decomposes to form dichloro diphenyl dichloroethylene. Okay, तो एक HCl निकल जाता है and then it forms dichloro diphenyl dichloroethylene. Okay, this is the correct answer of 15, B, DDE. DDT decomposes to form DDE. Okay, अब देखते हैं question number 16. The life cycle assessment, LCA, of any product does not include which? Life cycle inventory of the product. It does include that, so this is not the correct option. Quantitative improvement in the process of the product. This is also not the correct option. Life cycle impact analysis. This is also not the correct option. D,
Emergency preparedness plan. This is the correct option. Life cycle assessment of any product does not include an emergency preparedness plan because this is not a part of the LCA. ठीक है, तो लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होता है कि प्रोडक्ट जब बनता है वहां से लेकर प्रोडक्ट जब डिकम्पोज होता है और या फिर लैंडफिलिंग होता है या इंसिनरेशन होता है, वहां तक का प्रोसेस में क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है. तो लाइफ साइकिल इन्वेंटरी ऑफ द प्रोडक्ट, ये तो उसका पार्ट ही होता है. क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोसेस बनने में क्वांटिटी मात्रा से बढ़ोतरी, ये भी उसका पार्ट है. लाइफ साइकिल इम्पैक्ट एनालिसिस, कि पूरे बनने से लेके और प्रोडक्ट के यूज होने के बाद नष्ट भ्रष्ट होने तक क्या इम्पैक्ट वो इन्वायरमेंट पे या सराउंडिंग पे या इकोनॉमिक्स पे डाला, तो वो भी पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल असेसमेंट है. लेकिन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान ये का पार्ट है कि लाइफ साइकिल असेसमेंट का पार्ट नहीं है. तो आंसर होगा 16 का डी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17, द बेस्ट वे टू डिस्पोज कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, CND वेस्ट. ये मैंने आई हैव रिटन द फुल फॉर्म, बट यूजुअली इन द UGC NET एग्जाम they will not write the full form. You will have to understand the full form. So the CND means construction and demolition waste. The best way of disposal of construction and demolition waste is incineration, no. Recycling, maybe. Landfilling, let's see, and solidification. So answer will be landfilling. क्योंकि जहां भी कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट होता है उसको हमेशा आप किसी गहरी जमीन को भरने के लिए यूज करते हैं या फिर लैंडफिल साइट में भरने के लिए यूज करते हैं. तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का बेस्ट तरीका है, द करेक्ट ऑप्शन इज C, landfilling, because construction and demolition waste is often used to fill up low-lying sites and are used as dumping material in the landfill site, and they can also be used to cover the landfill after every day. So they are best option for best uses landfilling. C. Pyrolysis of solid waste means aerobic incineration, no. Aerobic distillation, no. Anaerobic distillation, no. Anaerobic distillation of waste at high temperature for energy generation. And if you want to know more, I'll explain it to you, which is 18. The correct answer is B. The pyrolysis or devolatilization process is the thermal decomposition of organic material at elevated temperature in an inert atmosphere. Inert atmosphere means there is no oxygen, there is no reactive gases. So inert atmosphere usually has nitrogen or other inert gases. It involves a change of chemical composition. The word is coined from the Greek derived element pyro, means fire, and heat is fever, and lysis is separating. तो pyrolysis को devolatilization भी कहा जाता है. थर्मल डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का हाई टेम्परेचर पे इनर्ट एटमॉस्फेयर में. इनर्ट मतलब नाइट्रोजन के प्रेजेंस में या कोई भी इनर्ट गैस, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं. तो एरोबिक नहीं होता है. और एनारोबिक में होता है कि किसी भी तरह की हवा ना हो, तो वो भी नहीं होता है. तो इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है. इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन. और जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना है. पायरो मतलब आग, हीट मतलब फीवर, और लाइसिस का मतलब होता है सेपरेशन. ठीक है. तो पायरोलाइसिस मतलब हाई हीट पे सेपरेशन. ठीक है. तो एनारोबिक डिस्टिलेशन ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर फॉर एनर्जी जनरेशन. ठीक है. तो एनारोबिक कह सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसलिए एनारोबिक कह सकते हैं. मैं अपने आप को करेक्ट करती हूँ. Which of the following biomass conversion processes produces biogas from crop residues? इसमें से कौन सा प्रोसेस है बायोमास कन्वर्जन का जिससे बायोगैस बनता है? एनारोबिक डाइजेशन, फर्मेंटेशन, पायरोलिसिस या एरोबिक डाइजेशन? तो आंसर होगा एनारोबिक डाइजेशन, क्योंकि बायोगैस हमेशा एनारोबिक प्रोसेस से ही बनता है. बायोगैस इज ऑलवेज फॉर्म्ड आउट ऑफ एनारोबिक प्रोसेसेस बिकॉज इट biogas, the major component of biogas is methane and carbon monoxide, and those are the gases formed during anaerobic digestion. So correct answer is A, anaerobic digestion. ठीक है. What is the percentage of carbon in a typical MSW, municipal solid waste? So the percentage of carbon in a typical municipal solid waste is half, 50 to 60%. Okay, that is the correct percentage of carbon in a typical municipal solid waste. I hope what we discussed would be clear to you, and please like and subscribe to my channel for more practice sets, free lectures on environmental sciences, and regular job updates on environmental sciences. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. मिलती हूँ अगले लेक्चर.